Okay, everybody. So, in today's lesson, we'll be starting the questions, the past paper questions on probability. Yesterday, we studied probability, that what probability is. Like, for example, if you would like to give me, if I would like to give you a very quick recap on probability, as I said, the probability is a chance of happening, not happening, how likely. It means to check the chance of something that happened or will happen in the coming future. प्रोबेबिलिटी कहते हैं पॉसिबिलिटी को, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 to 1 और 0% टू 100%, ठीक है। याद रखिए, और टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 कि बारिश होगी, 1 नहीं होगी, 0। ओके, समथिंग लाइक दैट। सो फिर कल हमने एग्जांपल दी थी कि उस वक्त में वेदर जो था मेरे मोबाइल फोन पे, इट वाज 7 डिग्री सेंटीग्रेड, but according to the my weather application, on Saturday the temperature was 2 degrees centigrade at night. And like for example, I'm opening my phone weather application right now, and I want to see that how much this probability is right, because yeah, I can see that my phone today is showing the same 2 degrees at night, the lower temperature. Right now it's 16, but the lower temperature is 2 degrees centigrade at night, so it means that the probability was pretty much right. This temperature is the probability of Peshawar weather on the basis of today's weather or history of Peshawar. Then we studied the Ludo game. That in Ludo game, the probability of getting a score is 6 by 6, because there are 6 codes, and out of 6 you will get one for sure. We can see that these are the 6 codes. Then we studied about the probability of the primes, the probability of 6, and the probability of two sixes in a row, the concept of without replacement, and everything. Today we are going to see the questions which are the part of Cambridge examination, and as you can see that these questions, they are taken from the May June 2018 to October November 2019 past papers, O levels 4024 के past papers से को मैंने उठाया है questions को. Okay, now then look at the question very carefully, everybody. They say that Basia records the color of 100 cars passing 100 cars. Wait a minute. एक मिनट यार, ये थोड़ा इसको जूम आउट कर रहे हैं, ये ऊपर चला जाता है सेंटेंस. वेट अ मिनट. Basia records the color of the 100 cars passing through the school gate. Her records are recorded in the table. It means that Basia is standing at school gate and she's recording the colors of the car. She saw that in 1 hour, in 1 hour, color of the car, black cars, 43 black cars passed. Gray cars were how many? Gray cars were 18, red was 12, the lowest was blue, which is 9, and others were 18. Out of these 4 colors, if for example another color, so that is in the others. Okay. Now, according to this question, use the result to estimate the probability that the next car seen is blue. So blue, so probability of blue is how much? Probability of blue is, we can see that there are 9 blue cars out of 100. Yes or no? Everybody? We can see that we cannot simplify 9 by 100 because it is already simplified form. So that is the reason this is your answer. Is this clear? All of you? Yes, sir. Okay, that's good. Thanks. Now, in the next 500, in the next hour, 500 cars pass the school gate. 500 गाड़ियां स्कूल के गेट से पास हो गई हैं. Use Basia result to estimate the number of these cars that are red. First of all, let's check how many red cars are there out of 100. So out of 100, there are 12 red cars. Can you see that? There are 12 red cars out of 100. And 500, it would be multiplied by 500. Yes or no? Yes or no? So Yes, sir. 0 times 0. So 12 times 5 is 60 cars, which would be red cars. Isa समझ आई है बेटा? Sir. Okay. Colin records the color of the next 100 car passing through the school gate. His results are shown in the table below. अब Colin एक दूसरा बंदा है, ठीक है, उसने दोबारा दूसरी 100 गाड़ियों का कलर रिकॉर्ड किया है. He said that the black ones are 34, gray 10, red 18, blue 28, and others are 10. Use Basia's and Colin combined result to estimate the number of red cars that will be seen when 500 car pass the school. So red cars out of 100 are 18 here, are 18 here, uh,
times 500. So that would be 0, 0 cancel. 18 times 5 is 90 cars. Okay. Now, they say that which of the estimates in part B or in part C is likely be to the best. Give a reason. The best estimate is what? We can see that the best estimate is what? The best estimate is part B, which is because of part B is the best estimate because of लार्ज सैंपल. जितना आपके पास सैंपल ज्यादा होगा उतना आपका रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे होंगे. ठीक है. तो Sir, 100 में से 18 जो है वो इतना समझ नहीं आता है, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि 500 में से 90 गाड़ियां जो हैं वो हैं क्या? रेड. तो जितना आप बड़ा सैंपल लोगे उतनी आपकी रिसर्च ज्यादा वैलिड होगी. जी बेटा. sir, I think the answer to part C is 75. I solved द these yes. आंसर टू द पार्ट सी इज व्हाट? 75. Yeah, please do it then. 18 times 5 is what? Mistakenly लिखा हो शायद. Check कर लो. 18 times 5 is सर 90 है, 90 18 है सर. times red car that would be seen when 500 cars pass. तो 18 divide by 100 times 500. इसको check कर लेते हैं बाद में. ठीक है. किसका आंसर क्या आ रहा है? ठीक है. क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यूज बसियर्स एंड कॉलन कंबाइंड रिजल्ट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ रेड कार्स that would be seen when 500 cars passes through the gate. इसको देख लेते हैं. कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ले लेंगे बाद में. पहले इसको जरा समझ डाल लें थोड़ा सा. ठीक है. इज दिस क्लियर? ये Yes, sir. आंसर आ रहा है 90 कार्स. ठीक है. 90 कार्स. ओके. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे लिंक बनाएं क्योंकि ये आपका पहला पहला क्वेश्चन है. ओके. सो लुक एट दैट. ओके. मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले. मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ इस क्वेश्चन पे. मैं इसको आफ्टर दैट मैं इसको वेरीफाई करके ग्रुप में वॉइस नोट भेज दूंगा. ठीक है. डोंट यू वरी अबाउट दैट. ओके. नाउ वी कैन सी दैट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए पास पेपर क्वेश्चन है. ये मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लिया तो आपको नजर आ रहा होगा. It's 402 May June 18. मतलब पेपर में कैलकुलेटर नहीं अलाउड. A dice is thrown 400 times. एक लूडो डाइस है उसको 400 टाइम्स फेंका गया है. डाइस के ऊपर we have numbers 1 2 3 4 5 6 and the frequency of the dice is given. Find the relative frequency of the dice throwing the number 2. So number 2 means probability of number 2 is 2 is 80 out of 400. So can I cancel 0 with the 0? Yes or no? यस सर. That would be 4 by 20, half, and that would be 2 by 10. That would be 1 by 5. So this is your final answer, right? The simplified form. We have to give the simplified form throughout the paper. Okay. Now they say that Imran throws the dice 1000 times. How many times would you expect the number 2 be to be thrown? So the probability of 2 is the probability of number 2 is it's 1 by 5. We already did in part 1. And out of 1000 times 1000, so it would be 1000 divided by 5. So you can expect 200 times number 2. Agree? Is this clear everybody? Yes or यस no? सर. क्लियर नहीं हुआ सर. ये जी 1/5 क्यों लिखा है? ओके. ये 1/5 इसलिए लिखा है कि पार्ट ए में आपने 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ना. 1/5 है. जी. तो आपने उसने कहा है ना कि 1000 में कितने होंगे. एक अच्छा ठीक है पांच ठीक में है ठीक. ओके पांच में सर. एक है तो 1000 में 200 होंगे ना. 200 एग्री? होंगे. यस. ओके. आप कोई भी इसका मेथड इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. ओके. अब जरा देख लें प्लीज. प्लीज पे अटेंशन. 12 letter tiles spelling the word trigonometry. Okay. So the total letters are 12. That's good. Are placed inside the bags. Rita, can you hear me? Yes, sir. Okay. There are 12 tiles. You can see that. And every tile has a letter on it. And the word is trigonometry, which is the branch of maths deals with the study of triangle only. A tile is taken at the random from the bag. Now all the tiles are in the bag. Find the probability that the tile shows a letter R. There are total 12 letters. Agree? And out of 12 letters, we have how many letter R's? Count it, please. 1, 2. We have two letters with written
R. Agree? So it would be 2 by 12, which is 1 by 6. Right, Hurera? So the probability of getting a tile that shows a letter R. So give your answer as a fraction in the simplest form. So that is the reason 1 by 6 is the simplest form. Rida, do you get this? Hur and Noor? Yes, sir. Okay, all the tiles are placed back in the bag. A tile is then taken at random and placed on the table. Okay, a second tile is taken at random and placed to the right of the first tile. A third tile is taken at random and placed to the right of the second tile. That's good. बस इसका आसान सा मतलब ये है कि इन 3 सेंटेंसेस का मतलब जरा आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि आपने पहली टाइल निकाली, टेबल पे रख दी, एग्री? दूसरी टाइल निकाली, उसके साथ रख दी, राइट पे। फिर तीसरी टाइल निकाल रहे हैं तो फिर आपने दूसरी के साथ में रख दी, तो आपने तीनों टाइल्स को इस डायरेक्शन में रखा है। इज दिस क्लियर? जी सर। ओके, किसी को ये सेंटेंस समझ ना पड़ी हो तो पूछ सकता है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that in order the tiles were placed on the table and they spelled get. Okay, Isa, can you hear me? Sir. Okay, pick G. How many G's are there in the word trigonometry? G कितने हैं बेटा? Take and a 1. Just 1. So probability of G is what? By 12. Okay, it would be 1 by 12. Okay, multiply by E is wet means E is what? E कितने हैं? E जी इसमें एक अभी अभी One. बैग में कितनी टाइलें पड़ी हैं? 11. Yes, because the one tile is 1 on the by table. 11. It would be 1 by 11. Okay. Hurera, can you hear me? Hurera. Yes, sir. Okay. Now you have to pick T from the bag, and there are only 10 tiles left in the bag. Okay. Out of 10, how many are T's? Make it quick. This is the first T tile, and this So 2 is by the. 10. So it would be 2 by 10. Right, Noor? Hurera? Now the three fractions are in multiplication. Rita, you can see that 1 times 1 is 1 and 1 times 2 is 2. So it would be 2. Okay, 12 times 11 is what? Make it quick. जरा एक multiplication जरा जल्दी से कर सर लें. आंसर सर तीनों का आंसर 1320 है सर. 1320. Now please half it. 2 ones are 2. And 1320 divided by 2 is 660. So the answer is 1 by 660. Is this clear? यस सर, समझ आ गई. रिदा समझ आई है बेटा? Sir. Okay, नूर एंड हूर बेटा समझ आ रही है? Yes, sir. Okay. Okay. Barira, the question is from you. Please pay attention. Vowels are the letters A, E, I, O, U. It means that vowels are those letters in English alphabets which make sounds. Okay. All the other letters are consonant. ठीक है. A, E, I, O, U के अलावा जितने भी letters होते हैं वो तमाम के तमाम consonant हैं. All the 12 tiles are placed back in the bag and 2 tiles are taken at random without replacement. Without replacement का मतलब बताया था कि जब आप एक टाइल निकालोगे तो दोबारा जब निकालोगे तो वो टाइल तो बैग में नहीं है तो टोटल रिड्यूस हो जाएगा. Okay. First of all, Barira, total probability is always 1. Agree? Agree? Okay. 4 by 12 are vowels. So the rest are? What should I write here? So 2 by 3. No. 2 by 3 का क्या मतलब है यार? 8 by 12 सर, 8 by 12. 8 by 12 सिंप्लीफाई करके ना बोलें, ठीक है? ट्री डायग्राम पे आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. ओके? जी सर. ओके. नाउ नूर, कैन यू हियर मी? Sir. Okay, for example, I picked a vowel. For example, I picked a vowel. You can see that. I'm picking the second vowel, so now it would be 3 by 11. Agree? Sir. So it means that total 11
vowel cards are in the bag. So how many of 11 they are consonant? Sir, 8. Very good. It would be 8 by 11. Okay. Now, Murtaza, can you see that I picked a consonant in this case? Agree? जी सर. Now I'm picking a vowel. So what should I do? What is the probability? I know that the total would be 11 in both the cases. जी सर. Yeah? Okay. How many vowels are there in the bag out of 11? सर एक मिनट सर. सर 5. No, 5 तो है ही नहीं, totally 4 है. सर vowels हाँ 4 है. हाँ जी, आपने कॉन्सोनेंट निकाला ना बैग से, जी सर. तो मतलब वावल अपनी जगह पर 4 बाई 11 ही है, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे 7 बाई 11. ठीक है? जी सर. ओके सर जरा समझ मैं नहीं आया. मैं अभी सबक अगर मैं रिपीट करता हूँ जरा. लुक एट दिस वर्ड ट्रिगोनोमेट्री. जरा काउंट कर लें लेटर्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके सो वावल्स जो हैं इसमें हैं आई ओ ओ ई. सो ए ई आई ओ यू जो है वावल्स हैं, तो आई ओ ओ एंड ई, दीज आर वावल्स. Okay. Now these are consonant. The vowels they are 4 by 12 and this one is 8 by 12. That's agree. Okay. Is this clear everybody? Yes sir. Okay. Now look at the question. जरा question देख लेते हैं. All the time. Okay. Complete the tree diagram. Okay, that's good. Okay. हाँ जी. So फॉर एग्जाम्पल ट्री डायग्राम को मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ. वावल कॉन्सोनेंट. ओके सो बेटा वावल जरा पिक करें. पिक वावल फ्रॉम द 12 कार्ड्स. द प्रोबेबिलिटी वुड बी 4 by 12. 4 by 12. अब जरा कॉन्सोनेंट पिक करें. सर 8 by 12. 8 by 11. आपके पास वावल हाथ में है ना यार. आपने विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है ये. समझ आ गई? जी सर. रिदा पिक कॉन्सोनेंट फर्स्ट एंड देन वावल. कॉन्सोनेंट को पहले पिक करो. मेक इट क्विक. रिदा सर मैं करूं? नहीं. Noor, can you hear me? Yes, sir. Okay, pick a consonant first and then vowel. 8 by 12. Okay, consonant is 8 by 12. Now that consonant is in your hand. Now the total are 11 cards in the bag. And how many of them are vowels? 4. Yes, because आपने consonant pick किया है, vowel तो pick नहीं किया. समझ आ गई सबको? जी सर. Ishal, do you get this? ईसा समझ आई है बेटा? Yes, sir. Okay, I'm repeating the question once again. Rida, you left the class, so please pay attention now. Okay. Please tree diagram को जरा गौर करें. All the 12 vowels are in the letters are the letters A, E, I, O, U. All the other letters are consonant and all the 12 tiles, ये उसी question की बात हो रही है trigonometry की. And all the 12 tiles are placed back in the bag and 2 tiles are taken at random without replacement. So Rida, can you hear me? Yes, sir. बेटा total probability होती है 1. Agree? अब Yes. मैंने रूलर के जरिए एक लाइन यहाँ पे लगा दी है ताकि मैं आपको जरा सेपरेट कर दूं. आप लोग नीचे का हिस्सा नहीं देखेंगे. ओके, प्रॉमिस? डन? जी सर. प्लीज डोंट वॉच बिलो द लाइन. ठीक है, आपने लाइन से नीचे नहीं देखना. ओके, नाउ फ्रॉम द बैग आई पिक्ड 4 out of 12. What? 4 out of 12 what? It was vowel. Agree? Now वो vowel का letter जो है वो मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया. Now in the bag we have 3 vowels and 11 in total. Agree? Agree? Yes sir. Yes, sir. So 11 minus 3 is 8. So that 8 by 11 is the consonants. Agree? जी सर. Now please pay attention and look at below the line. Now total probability is 1 and out of 12, 4 were vowels. So it means that 8 were what? They were consonant. Agree?
जी सर। Agree? Okay. Noor, Hoor, Barira, everyone, please pay attention. Now I pick consonant out of 12, and that consonant is in my pocket. It means that there are 7 consonants left in the bag out of 11. Yes or no? Yes sir. Okay, Done. so there is no need to disturb the vowels because आपने vowel pick ही नहीं किया. तो 7 में से आप 11 में से आप 7 को माइनस करो तो 4 by 11 सेम आ गया आपके पास. ठीक है बेटा, समझ आ गई सबको and how to complete a tree diagram? जी सर। एनी क्वेश्चंस? अगर है भी तो आगे हम लोग दोबारा करेंगे. सर ओके. इसमें सिंपलीफाई नहीं करना होता? ना 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 ना, इसमें सिंपलीफाई नहीं करते. ट्री डायग्राम में सिंपलीफाई नहीं करते आप सब. ठीक है. ओके सर। ओके, सो रिदा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Find the probability that both tiles shows vowels, so that would be v times v. तो जरा v को देखें. v आपके सामने यहाँ पर ही है ना? Yes or no? Yes or no? Yes. Vowel to vowel, that is vowel to vowel, so that is 4 by 12 times 3 by 11. 4 3s are 12, and 12 times 11 is how much? सर 132। It would be 132. Simplify करें क्वेश्चन को जरा. 12 by 132 कैलकुलेटर में प्रेस करें तो क्या आ रहा है? हाफ कर लें. चलो 0.09. ना फ्रैक्शन में बताएं. 6 divided by 66 सर 1/11। and that would be equals to 1 by 11. ठीक है, फ्रैक्शन में ही छोड़ना है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही है. ओके ईसा, now your turn please. जी सर. Find the probability that one tile shows a vowel and one tile shows a consonant. क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? पहले ये बात बताएं. यस सर कि एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट हो. लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि पहला हो या दूसरा हो. Yes or यस no? यस. Agree? So guys, we have two possibilities: vowel consonant, consonant vowel. Agree? जी सर। Okay, keep in mind we have the question available. So मैं यहाँ पे जरा एक लाइन लगा देता हूँ. ये नीचे ही रहेगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है. ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा फिर. चलें जी. ईसा बेटा वावल पिक करो जरा. वावल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 by 12. 4 by 12. अब जब दूसरा कार्ड उठाओगे तो नीचे 11 होगा. यस और नो? यस. और ऊपर उस वो होगा कॉन्सोनेंट कितने? 7. नहीं, आपने कॉन्सोनेंट तो पिक ही नहीं किया यार. अच्छा अच्छा आपने ठीक है. हाँ जी, तो दैट वुड बी 8 by 11. दैट वुड बी 8 by 11. यस. ओके. ये मैं आपको जरा ट्री प्लस डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ. देखो जरा प्लीज, जरा पे अटेंशन. लुक एट दैट. Vowel multiply by consonant and consonant multiply by vowel. Agree? Is this clear? सर. So 4 by 12 multiply by 8 by 11 आप लिख चुके हैं. Okay, Barira. जी. Barira, can you hear me? Now please pick consonant first. आप consonant को pick करो. Consonant को pick करिए. बैग में कितने consonants हैं? Sir, 8 by 12. 8 by 12. Okay, वो consonant अब आपके हाथ में है. अब vowel निकालेंगे तो टोटल 11 होंगे. और 11 में कितने vowels हैं? Sir, 4. वेरी गुड, जबरदस्त. अभी बस कैलकुलेटर की मदद से इसको कर लें. 4 टाइम 8 इज, बिकॉज ये पेपर 2 का क्वेश्चन है. 4 टाइम्स 8 इज 32. दैट वुड बी 132 प्लस 8 times 4 is 32 divided by 132. Denominators are same, so Rida, write the denominator once and add the numerator. 32 plus 32 is 64. So 64 plus 64 कटिंग कर लें जरा, हाफ करें इसको. 32 by half is 66. 66. 16 divided by 33. By This is 33. this is your final answer. Is this clear everybody? यस सर। Okay, ये मई जून 2018 का क्वेश्चन था. So moving forward with the question. Okay, Isa, read the question for me please. 15 वाला. ये सामने जो 15 नजर आ रहा है आपके सामने. ठीक है. A five-sided spinner is numbered 1, 2, 3, 4, and 5. Ashraf spun the spinner 200 times. The results are shown in the table. Okay, 200 दफा स्पिनर घुमाया गया है और स्पिनर लैंड्स ऑन 1 is 30, 2 25, 3 50, 4 55, 5 40. इसे ये बताओ सबसे ज्यादा नंबर किस नंबर पे गिरा है? 4 पे. 4 पे, क्योंकि 4 नंबर जो है वो 55 टाइम्स आया है. अब पढ़ो जरा पहले नीचे वाला क्वेश्चन. कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन 3. तो 3. क्या लिखूं, आंसर क्या है? 3 by 200.
नहीं नहीं, 3 हम्म, क्यों? 3 की फ्रीक्वेंसी देखो. अच्छा 50 50 50 by 200. So it would be 50 by 200. Simplify करके बोलो ईसा. सर 1/4. वेरी गुड. ओके, मरियम ने स्पिन किया है द स्पिनर 20 टाइम्स. उसने स्पिनर को किया है 20 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स यू एक्सपेक्ट द स्पिनर लैंड ऑन 3? लैंड ऑन 3. तो पहले 200 में उसकी प्रोबेबिलिटी सर कितनी 50 है? हाँ जी. 50 ओके, 50. सो इट इज 50 आउट ऑफ 200. नाउ वी डोंट नो अबाउट द 20 टाइम्स. तो आप 20 के साथ जरा आप इसको टाइम्स कर लें, तो यू विल गेट द आंसर कि कितना आंसर आना चाहिए. वेट अ मिनट, इसको इस तरीके से करके देखें तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा. So it's 50 when it was 200. Agree? Yes or no? So it's x when it was 20. So now please cross multiply it. 5 into 20 is 50 into 20 is 1000. That is equals to 200x divided by 200 on both sides. So x is equals to 5. इसका मतलब है कि 5 दफा 5 out of 20, she can expect the number 3. Agree? और हम यहाँ से भी कर सकते थे. अच्छा, ये 1/4 Yes. हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है ना 3 की, तो हम कर सकते थे कि 1/4 times 20. So the answer is 5. ठीक है, ये दोनों मेथड है. ठीक है, आप कोई भी यूज करो. ओके, हुरैरा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay, Huraira, please read the part, please. Part C. Okay. Ashraf claims my results show the spinner is fair. Is his claim correct? Give a reason for your answer. Okay, he's claiming that his results are fair results, not biased, right? So, give your reason for the answer. Can you please tell that how he is right, or if he is right or wrong? You have to give the reason. Come on, do it. Look at the scores. They had 1 to 5 sided spinner. Agree? Agree? Okay. The frequency is equally distributed, right? It's not like that. It's not favoring anything. Agree? They got ones, they got twos, they got threes, they got four, they got fives. Agree, everybody? Yes or no? Yes, sir. So, according to me, Ashraf claim for this result of the spinner is right. What do you think? Sir, I think it is wrong because the spinner did not land on every number an equal number of times. So, beta, it is a spinner. It's not your choice, right? Ji, sir. It's not your choice to get that score at that time, right? जी सर. समझ आई है? तो ओके, सर इसका रिदा, क्लेम करेक्ट है. सबर करे ना जरा. रिदा, what do you think? So I रिदा, think correct because he repeated the process like many times. he repeated the, come on, many times. He repeated the process many times. The sample size is very large. I think so. He is right as well. Isa, what do you think? तुम्हें क्या लगता है कि ये ठीक कह रहा है कि इसका स्पिनर ठीक है बिल्कुल? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ. कंफर्म नहीं हो? क्यों कंफर्म नहीं है? क्वेश्चन समझ नहीं आई? क्योंकि क्वेश्चन तो रीड ही आपने किया था, तो आपको समझ आनी चाहिए. सोचे, खैर कोई बात नहीं, थोड़ी डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर. सर आप पूछ क्या रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ, पार्ट सी पढ़ो जरा आप. Ashraf, my results show that the spinner is fair. Is his claim correct? हाँ हाँ. नहीं सर, फेयर नहीं है. आपको क्या लगता है, फेयर है या नहीं है? नो सर, नहीं है. ओके, फेयर नहीं है. ओके, सॉरी, फेयर नहीं है. सो हूर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, दैट वेदर डू यू थिंक दैट द रिजल्ट शोन शो दैट द स्पिनर इज फेयर?
There is only one thing in the results. There is only one thing in the results. Look at the result with the frequency 3, 4, and 5. Frequency 3 is 50, frequency 4 is 55, frequency 5 is 40. But as compared to the frequency 1 and frequency 2, which is 30 and 25, we can see that the lower numbers, they are not in favor of this spinner. Can you see that? Can you see that, everybody? That sphere, that, sorry, it's not a Yes, sir. sphere, मेरे मुंह से sphere निकल जाता है, spinner, that this spinner has the numbers 3, 4, 5 favorable numbers, because 50 plus 55 is 105, 105 plus 40 is 145. So it means that out of 200, the spinner is favoring 145 times the greater values. Is this clear? Is Yes, this sir. clear? In the beginning, I thought as well that this spinner is fair spinner, but when I saw the result with 1 and 2, which is, you can see that in on your screen. एक मिनट, आपको अपनी स्क्रीन स्क्रीन पर ऑलरेडी नजर आ रहा है कि ये जो 1 एंड 25 का, एक मिनट, 1 and 25 की जो ये वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये फेयर नजर नहीं आती, बिकॉज 50 यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 55 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। तो ये स्पिनर जो है ये बड़ी वैल्यूज को जरा ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो हम इसको जो है ना, ये हम इसको फेयर नहीं कह सकते। सो द रीजन इज नो। और रीजन क्या देंगे? बिकॉज द स्पिनर इज फेवरिंग द हाईएस्ट वैल्यूज 3, 4 एंड 5। ठीक है, वी कैन गिव दैट काइंड ऑफ रीजन इन दिस क्वेश्चन। सर ये समझ लिख गए? सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं सर कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3। हाँ, 2 एंड, आप लिखना ये नंबर लैंड्स, और ये पूरी सेंटेंस लिखना, 2 एंड 3 नहीं लिखना, फिर पूरा सेंटेंस लिखेंगे। चलें जी, नूर, कैन यू हियर मी? ओके प्लीज सर, रीड ओके। द क्वेश्चन फॉर Yes, मी। sir. प्लीज रीड द क्वेश्चन। A contains three black and two white beads. Okay, Bag we can, B better calm down, contains stay relaxed, थोड़ा आराम से। We can see that bag A contains 3 black balls and 2 white beads. Sorry, they are beads. Okay, so it means total they are 5. And Noor, please continue the question for the bag B. bag B contains two black and four white beads. Okay, I can see that in bag A the black is favorable thing, and in bag B white is the most favorable thing. Agree or not? Yes or no? The chances of getting a black ball from bag A is much higher than bag B. Is this clear? Is this clear? यस सर। Okay. So Murtaza, please read the question, third line of the question. यस सर, a bead is chosen at random from bag A and placed in bag B. A Okay, bead, that's nice. That's nice. Though now look at the statement, please. This statement is very much tricky, so you have to pay attention to it. Okay, all of you. Rida, जी सर। बेटा ये जरा सेंटेंस पढ़ना दोबारा, जरा ये जो पढ़ा है अभी। A bead is chosen at random from bag A and placed in bag B. इसका मतलब ये है कि आपने एक भी अपने मर्जी से, या आपने जब जैसे उस बैग ए में हाथ डाला है, तो आपने बैग से बीड निकाला है और वो वाइट आया है, तो आपने अब उसको बैग बी में डालना है। एग्री? यस और नो? तो जब एक यस बीड आप बैग बैग ए से बैग बी में डालोगे, तो इस बैग बी के टोटल बीड्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। ओके, सो बस ये चीज अपना दिमाग में रखनी है। अच्छा, ठीक है, चलें जी। Total probability is 1. Total probability is 1. We know this already. Okay. Now you picked a black bead. Okay, आपने अब बैग से बीड निकाला है और वो ब्लैक आया है, और जब वो ब्लैक आपने सेकंड बैग में डाला, तो अब वहां पर 3 ब्लैक्स हो चुके हैं आउट ऑफ 7। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, लेकिन व्हाइट रिमेन्स द सेम, बिकॉज व्हाइट के अंदर कोई चेंज नहीं आया 4 आउट ऑफ 7। Okay, now it's time to complete this tree diagram. Hurera, can you hear me?
हुरैरा, ब्लैक, white. हाँ जी, Hurera. Hurera, pick a Yes. ball from bag A, and you see that the probability of white ball is 2 out of 5. Agree? Yes. Now you picked a ball and the ball is white, and you are keeping it in bag B. So it means that white increased by 5/7. Yes or no? Yes. Okay, well done. So it means that black remains the same. So it would be 2 out of 7. समझ आई है बेटा सबको? ईसा जी समझ सर। आई है बेटा? Okay, find the probability that the black bead is taken from bag B. कि black bead जो है ना वो bag B से pick किया गया है. So it would be black black plus white black. Can you see that? Can you see that? Because this is first pick from bag A, from bag A, and this is second pick from bag B. And you can see that in both the cases, we are picking the bag B, black bead from bag B. Is this clear, everybody? नो सर। जरा देख लें, फिर दोबारा स्टेटमेंट मिटा देता हूँ सब कुछ. पे अटेंशन प्लीज. स्टेटमेंट पे इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश. ये याद रखें कि प्रोबेबिलिटी सारी इंग्लिश पे आपकी रहती है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लैक बीड इज टेकन फ्रॉम द बैग बी. सो दिस इज बैग बी. ओके, एंड दिस इज ब्लैक एंड दिस इज ब्लैक. ओके, ये ब्लैक कहां से आया है? ये बैग आया है यहां से, और ये वाला ब्लैक आया है यहां से. इज दिस क्लियर? Yes or no? यस सर, यस सर। Okay, so that would be black black plus, if you pick a white and pick second times you pick a black, so that would be black. So WB. So Hurera, the black black probability आपको नजर आ रही है क्या? किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है. तो बोलो क्या लिखा हुआ है? 3 out of 5 times 3 out of 7. Agree? यस सर। Plus Rida, जी सर। व्हाइट और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ. व्हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्लैक, तो व्हाइट ब्लैक को एरो नजर आ रहा है आपको? 2/5 हाँ हाँ, into 2/7. good job. Agree? In both the cases we picked black bead in from the second bag. Agree? ओके सर। So 3 times 3 is 9, 5 times 7 is 45, plus 2 times 2 is 4, 5 times 7 is 45. Oh, sorry, it's 35. It's not 45. So it's 35. So 9 plus 4 is 13. So it would be 13 out of 35. Cutting not possible because 13 is a prime number. Agree? Is this clear, everybody? यस सर। Easy or not? सर एक बात सर, व्हाई आर वी पिकिंग, मतलब अब पहले वाले में हम सेकंड में हम ब्लैक इस क्यों पिक कर रहे हैं सर? ब्लैक की तो प्रोबेबिलिटी कम है। देख लेना, आप नहीं पिक कर रहे. एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दैट अ ब्लैक बीड इज टेकन फ्रॉम बैग बी. और बैग बी से हम लोग बीड तभी निकालते थे जब हमने ऑलरेडी बैग ए से एक बीड निकाल के बी में रखा होता था. एग्री? जी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको ट्री डायग्राम में एक ही चीज नजर आ रही है. बैग ए और बैग बी नजर आ रहा है. तो जी बैग सर। ए के अंदर अगर आप लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल इस साइड से आपने ब्लैक को पिक करना है. इज दिस क्लियर? जी। तो इस साइड पे ये जो दो ब्लैक्स आपको मैंने शेड करके बताए हैं, ये क्यों आए हैं? क्योंकि पहले आपने ब्लैक पिक किया, वापस डाला तो दोबारा ब्लैक निकल आया. एग्री? दूसरे केस में आपने व्हाइट पिक किया, बैग में डाला, लेकिन वो ब्लैक निकला. इज दिस क्लियर? अच्छा सर, तो जो ऊपर है वो पिक हुआ है। यस. मैं जरा एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जरा मैं अपने स्टाइल से करता हूँ क्वेश्चन. अभी तक हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें इसमें हमने लिखी हैं, तो काइंडली प्लीज जरा चेक करें. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है.
ठीक है? नाउ प्लीज पे अटेंशन, जरा मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा तो आप लोग बीच में बात मत करें, ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आए और ये अच्छा रिकॉर्ड भी हो जाए. ओके. टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. Okay. According to the question, a bead is chosen at random from bag A and placed in the bag B. मतलब मुझे bag A में से एक bead pick करना है और bag B में रखना है. ठीक है? Okay. That's good. Okay. For example, if I picked a black bead from bag A and I placed it in a bag B, so now there are 3 out of 7 black beads in bag B. Okay. So it means that if 3 are black, so 4 out of 7 they are white beads. Now, in the second step, if I picked 2 out of 5 white beads, you can see that there are 2 white beads in bag A, and I'm placing the white bead in bag B. So that portion will be for the black, and that portion would be for the white. Okay, so 2 out of 5. So now there are total 7 beads in the bag because I'm placing one extra white in it, and black remains the same. So black is 2 out of 7, and white would be now 5 out of 7. और ये 5 कहाँ से आया है? क्योंकि यहाँ से ये वाला white bead निकाल कर मैंने यहाँ पर प्लेस किया है. इज दिस क्लियर? यस सर. समझ आ गई सबको? जी सर, यहाँ तक समझ Okay. आ गई. Okay. Find the probability that the black bead is taken from the bag B. इसका मतलब है examiner is not in concerned with the bag A. So आपने black bead ही pick करना है. So that is black and that is black. Or it's only possible because of when you picked black black, agree? And when you picked white black, agree? So you have to multiply these two stems. आपने इन दोनों stems को multiply करना है. So it's 3/5 times 3 out of 7 plus 2 out of 5 times 2 out of 7. अच्छा So सर, ये that हम would दो be, केसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. yes, दो cases हैं. आपको समझ पड़ रही है ना कि अच्छा अच्छा, black. जी जी सर, अब समझ So आ गई. it would be 9 out of 35 plus 4 out of 35. Agree? So for example, it would be 13 out of 35. बेटा मैं एक जरा छोटा सा एक जनरल सा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जरा. For example, I'm planning to go for a wedding. ठीक है? I'm planning to go for a wedding and I have a choice to pick red, white, and yellow shirt, right? These 3 shirts are available. Now I have a choice of pant, that black pant. Agree? Now I know that I can wear black red, I can wear black white, I can wear black yellow. Yes or no? Yes or no? यस सर, यस यस. So it means that I am wearing 2 different colors. Agree? Because I don't have any black shirt available in the first row. Agree? But यस I can pick red shirt first, then black pant. Yes or no? White shirt first, then a black pant, yellow shirt, and then black pant. Agree? यस सर. It was not clear, but if it is clear that I picked the black pant first and yellow shirt on the second, now that statement is clear from the examiner. Agree? Agree? यस सर. That's good. So ये इसी वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आया था. इसका क्वेश्चन खत्म हो चुका. आगे चलें. चलें जी. ईसा, this question is from May June 2019. ईसा, ओके. ईसा की मुझे आवाज नहीं आ रही, तो लेट मी चेक. Mubin, read the question, please. Mubin, read the question. The question is that Jim plays for his local football team. The probability that Jim plays in the next match is 0.7. Okay, that the Jim plays the match. So it means that total probability is 1. If Jim plays the match, it is 0.7.
he is not playing is 0.3. Agree, everybody? Now, if Jim plays in the match, the probability of his team winning is 0.8. So it means that if he plays, so 0.8 is winning, so 0.2 is losing. If 0.6 is winning, so 0.4 is losing. Is this clear, everybody? Yes, sir. Rida, Hurera, Noor, Hur, Barira, Ishal, Murtaza, Isa, Mobeen. Is Yes, this sir, clear, clear, sir. everybody? Yes. Okay, that's good. Noor and Hur? Yes, sir. Okay. Now, Rida, please focus. Calculate the probability that Jim's team win their next match. Whether he is playing or not playing, they are not concerned. Agree? We have to see team wins. So team wins. So that is team wins. So it happened just because of these two. Agree? And it happened just because of these two. Is this clear? Yes, sir. So 0.7 times 0.8 bracket close plus 0.3 times 0.6. 7 8s are 7 sevens are 49, 56. So that would be 0.56 plus 0.18. Please do add them. 0.6 Sir, it is 0.74, sir. 0.74, 74. or if I multiply with 0.74 multiply with 100, it is 74% chances that Jim teams wins the match. Agree? Whether he plays or not, because the statement Yes, was sir. not clear. Okay. Hurera, can you hear me? Sir, one more question. हाँ. सर अगर उन्होंने कहा होता कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इफ जिम प्लेज तो देन हम 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करते ना. हाँ बिल्कुल. ठीक है. ओके सर. जी सर, ठीक है. Okay, Rida. जी sir. Okay, read the question, please. Nima has these 6 cards. Each card has a shape on it. Okay, She आपको क्या takes नजर आ रहा है कि 6 में से क्या क्या है? 4 circles और 2 triangles. Okay, total probability 1 है तो सर्कल 4/6 है तो ट्रायंगल्स कितने होंगे? 2/6. जबरदस्त. चलो जी, ये होगा 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा. फिर पढ़ें. Come on, second line. She takes 2 cards at random without replacement. Okay, पहला कार्ड निकालती है, फिर वो हाथ में पकड़ती है, फिर दूसरा कार्ड निकालती है. ठीक है? ठीक है? जी sir. विदाउट रिप्लेसमेंट इसको कहते हैं. ठीक है? ओके, आपने सर्कल बाहर निकाला और जब दूसरा सर्कल निकाला तो अब 3/5 हो चुके हैं. एग्री? तो ट्राइंगल तो अभी तक बाहर आउट ही नहीं हुआ तो दैट वुड बी 2 out of 5. एग्री? एग्री? यस सर. Now you picked Isa, can you please tell me the other two branches? Now you picked triangle 2 out of 6. अब आपके पास वो ट्राइंगल आपके हाथ में है तो आप बैग में कितने ट्राइंगल पड़े हैं? टोटल कितने ट्रायंगल्स है? 2 है. देखिए ना सामने सामने 2 में से एक 2. निकाल चुके हैं आप. ठीक है. तो अभी तो बैग में 1 out of 6 1/5 हुए. 1/6. Yes, 1/6. No, it is 1/5. पहले ठीक तो बोला मैंने था. पहले 1/5 बोला, आपने कहा नहीं 1/6. हाँ तो ठीक है ना बेटा, कभी मैं गलत भी लिख दूं तो आपने बोलना है मुझे कि सर आपने गलत लिखा है. ठीक है? और मैंने बोला, आपने फिर मुझे गलत कर दिया. And there are 4 out of 5 circles already because हमने सर्कल निकाला ही नहीं है. ठीक है? Now find the probability that the shapes on NEMA 2 cards are of the same. तो ये हो सकते हैं तभी when it is circle circle plus triangle triangle. Agree? So circle यस यस circle. सर. Okay, circle circle नजर आ रहा है सबको? This is circle 4/6 circle plus 3/5. and this is plus नहीं ना, multiply होता है बेटा. 4 out of 6 times 3 out of 5 ये हो गया 1 plus triangle होगा. head 2 out of 6. जी बेटा जी. And second triangle is 1 out of 5. देखो पहला सर्कल निकालूंगा तो 4 थे आउट ऑफ 6. दूसरा निकालूंगा तो 3 होंगे आउट ऑफ 5. एग्री? 4 3s are 12.
divided by 6 5s are 30 plus 2 divided by 30, that would be 14 out of 30. Simplify karo, 7 out Sir, of 7 by 15. 15. by Okay, 15. this is your final answer. Okay. Okay. Okay, last question for today. ये statistics और probability का mixture है. इसके अंदर जो है, इसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको भिजवाऊंगा ये तो मैं सॉल्व भिजवा दूंगा सारे. इसके बाद अनसॉल्व भी कुछ भिजवाऊंगा 2 years के, वो अपने खुद करने हैं. प्लीज पे अटेंशन. The table summarizes distance d meter of 80 women. So 80 women, so it means that total frequency is 80. Okay, that's good. One of these women is chosen at random. Find the probability that she threw the javelin 30 meter or less. So 30 meter or less, these are two. Yes or no? Yes or no? So 6 plus 16 is 22. Out of 80 is the probability that she threw the javelin 30 meters or less. That is 11 out of 40. रिदा समझ आइए बेटा? जी सर. Okay, अब मैं ये ऊपर वाला जरा इरेज कर देता हूँ. Calculate an estimate of mean. So mean के लिए आपको सबसे पहले उसका formula mean is equals to summation fx divided by summation f. Okay, f is available, x is not available, so x is your midpoint. तो वो आपका midpoint होता है. So that is your midpoint. Midpoint between 20 and 25 is 22.5. Calculator ready करें बेटा. 25 to 30 is, it is 27.5. 30 to 35, the midpoint is 32.5. 35 to 40 is 37.5. 40 to 45 is 42.5, and the last one is 45 to 50. It is what? It is 47.5. it is 47.5. So now we need fx. So please multiply the midpoint with the frequency. 22.5 times 6 is what? Please. What? So 135. 135. Now 27.5 times 16. 440. 440. 32.5 times 25. So 812.5. What? 812.5. 81. 2.5. बेटा इसको इस तरह पढ़ो ना, 812.5. Okay, 37.5 times 18. 937.5. 937.5. Okay, 42.5 times 13. Sir, 552.5. 552.5. Okay, 47.5 times 2. Sir, 95. 95. Okay, इन सबको ऐड भी करने, प्लीज ऐड ऑल ऑफ देम. समेशन fx में लिखना है, आप लोग ऐड कर ले. 135 प्लस 440 प्लस 812.5 प्लस 937.5 प्लस 552.5 प्लस 95. ठीक है नहीं? डिवाइड बाय 80. सो द आंसर इज Sir, 2972 upon point 5. Point 5 अपॉन upon 80. जी. सो द आंसर इज सर कर रहा हूँ एक मिनट. सर 7.1. ये है 37.15. 37.15. So this is your final answer. So this is the mean result. 37.15. and देखें, it makes sense कि 37 is in this data. ठीक है? ये ना हो कि आपका रिजल्ट 19 आ रहा हो जबकि 19 है ही नहीं डाटा में. ठीक है? ओके, ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें चाहिए, पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे. तो ये होगा जी हमारा डाटा. ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी फिर होती है CF. तो फ्रीक्वेंसी इज 6, 16, 25, 18, 13 and the last one is 2. तो CF कैसे लिखते हैं? Write first one as it is, then add 6 plus 16, 22, 22 plus 25, 47, 47 plus 18. 47 plus 18 is what? 65. Sir, 65. 65 plus 13 is 78 and 78 plus 2 is 80.
ठीक है जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब जरा ये याद कर लें खाली कि 25, 30, 35, 40, 45, 50 इनके ऊपर प्लॉटिंग करनी है। तो यहाँ से टेबल में उठा लेता हूँ पहले। डुप्लीकेट। ओके, ये आ गया जी हमारा टेबल। टेबल की जगह आ गई है जहाँ पे हम लोगों ने इसको करना है पेस्ट। एक मिनट, अच्छा वो वहीं पे डुप्लीकेट हुआ है। वेट अ मिनट, एक मिनट। अच्छा डिलीट क्लिक करें, डिलीट। एक मिनट, एक मिनट। कॉपी, पेस्ट, डन। यही टेबल हमें चाहिए था, तो हमने ये टेबल जरा थोड़ी देर के लिए इधर रखेंगे ताकि हमारा जो है ये डाटा जो है ना इसको हम प्लॉट कर सके। थोड़ी देर के लिए इधर ही रख लेता हूँ टेबल। ओके, 25 पे प्लॉट 6। सो 25 पे इट्स द फर्स्ट वन। 25, 30, 35, 40, 45 इन पे प्लॉटिंग करनी है। तो 6 पे इट्स 6, 25 पे इट्स 6। 6 1 is this point because here the value is 6। क्रॉस लगाएं। फिर देन वी हैव 22। फिर हमें 22 लगाना है। सी एफ है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम है। अच्छा ऊपर वाली लाइन ना देखें आप लोग, ऊपर वाली लाइन को सर मैं ये काट लेता हिस्टोग्राम हूँ बनेगा, जी। हिस्टोग्राम बन रहे हैं ना सर? नहीं नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन रही है ये। इसको ऊपर अच्छा वाली अच्छा लाइन को सर। नहीं देखना क्योंकि सी एफ देखनी है खाली। ओके, 30 पे इट्स 22। 30 पे 22। देन वी हैव 35। 35 पे है 47। सो इट्स 47। ये 46, 47। Okay, then we have then we have 40 पे it's 65, so it's 40 and it's 65. And then we have the last one, 78 on 45। 78 on 45 ये होगा 78। and the 50 is 80 full। okay, so now join it। आपने करना है join। तो ज्वाइन करने का तरीका ये है कि स्टार्टिंग से आपने लेना है इट्स अ कर्व। तो क्रॉस टू क्रॉस जो है आप इसको ज्वाइन करें। इट्स अ फ्री हैंड, रूलर नहीं रखना। लाइनें लगाई तो यू विल गेट 0 फ्रॉम द एग्जामिनर। इट्स अ फ्री हैंड ग्राफ, वरना एग्जामिनर की तरफ से आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, डन। दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड इट्स अ कर्व। ओके, डोंट यूज डोंट यूज स्केल मींस रूलर। रूलर यूज नहीं करना। हैंडमेड होना चाहिए, हैंडमेड होना चाहिए। प्लॉट करना है, क्रॉस लगाना है। ठीक है, डोंट यूज ओनली डॉट। डॉट इज द रॉन्ग चॉइस। ओके, अब मैं ये टेबल मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, टेबल मैंने मिटा दिया क्योंकि क्वेश्चन हमने प्रोसीड करना है। वंस यू आर डन विद द cumulative फ्रीक्वेंसी you get 3 marks for that। find the median। median is 50%, means half। 50% of cumulative frequency which is 80, that is 40th value। So join 40th with the curve। So join 40th with the curve, hit it downwards और अब इसको नीचे ले आए। So the result is 37। Now result is 31, 32, 33, 33.5। Interquartile range is upper quartile minus lower quartile, right Rida? Upper quartile is 75% of cumulative frequency which is 80, minus lower quartile is 25% of 80। So 75% of 80 is 60। So hit पहले 60 से एक वैल्यू निकाल लो मुर्तजा। जी सर। 60th वैल्यू देख लिया मैंने यहाँ पर। तो ये आ रहा है 36, 37, 38.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 38.5।
माइनस, अब देखेंगे 25th वैल्यू विच इज 20, 25th वैल्यू ऑफ 80 जो है वो 20 आएगा. ओके, दैट वुड बी 29.5. 29.5. 20 सर कैसे 20 आएगा सर? बेटा 25% ऑफ 80 अच्छा इज अच्छा 20. सही है सर ओके, ठीक है ठीक सो ठीक है ये यहाँ पे मैंने किए हैं, तो दैट इज लोअर क्वार्टाइल, दिस इज मीडियन, and this is upper quartile. So please, 38.5 minus 29.5 is what, 9? Okay, women who threw the javelin more than 43 meter qualified for the regional competition. Use your graph to estimate the number of women who threw for this competition. So it's 43 meters. Okay, so please let me pick a blue color now. So 43 is 41, 42 and 43 is this line. देखते हैं कि कितनी वुमेन्स ने क्वालिफाइड किया है इस कंपटीशन में. डन. नाउ go there. So it's सर 74 74. So 80 minus 7, ये वाली हैं खाली. 80 minus 74 ऊपर वाले हैं. अच्छा सर 70, 80 minus 74. So there are only 6 women who qualified the competition. Is this clear, everybody? जी सर बेटा आई सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ 2 years. ठीक है, 18 और 19 के कर लिए हैं. 20, 21 और 22 के क्वेश्चंस को आप लोग खुद प्रैक्टिस करें एंड चेक के वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और नॉट. टुडे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों को मैंने कर दिया है खत्म. ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ, स्पेशली मारुख. मिशाल इज ऑलरेडी नॉट इन द क्लास, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुनेगी तो उसको भी कह रहा हूँ. मुबीन and Noor and Hoor. Beta, if you have any problem in these questions, you have to tell me, ठीक है, so that I can discuss it tomorrow. But you have to practice the past paper questions of these two topics, stats and probability, today in your past papers and finish it. Okay? Is this clear?